Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel. Today we are going to discuss Agha Shahid Ali's poem Postcard from Kashmir. Let's start by reading out the poem. Kashmir shrinks into my mailbox, my home a neat 4 by 6 inches. I always loved neatness, now I hold the half-inch Himalayas in my hand. This is home, and this the closest I'll ever be to home. When I return, the colors won't be so brilliant, the Jhelum's waters so clean, so ultramarine, my love so overexposed, and my memory will be a little out of focus. In it, a giant negative, black and white, still undeveloped. Now let's try to find the meaning of the poem. We have to understand that Agha Shahid Ali, while writing this poem, is in the United States, and he has probably received a postcard from Kashmir, and with it the photograph of Kashmir also. If we look at the opening two lines of the poem, Kashmir shrinks into my mailbox, my home a neat 4 by 6 inches. Here he's indicating that he has received a postcard which contains a photograph of Kashmir, a place the speaker still considers his home. Then moving on, he says, I always loved neatness. Now I hold the half-inch Himalayas in my hand. Here he's talking about, we are not sure, maybe he's talking about that postal stamp which is pasted on the postcard and which has the picture of Himalayas on it. That can be the literal meaning of it, but if we get to the ironic meaning of it, he's suggesting that over a period of time, the glory of his homeland, that is Kashmir, has diminished. It has diminished to an extent that he calls Himalayas the half-inch Himalayas. We have to understand that this poem depicts the nostalgia that Agha Shahid Ali is feeling for his home. This is home, and this the closest I'll ever be to home. These are some of the poignant lines in the poem. Here he is suggesting that maybe he'll not be able to return to his homeland. He is suggesting, because he cannot return back to Kashmir, this photograph, it can suffice as a poor substitute. When I return, the colors won't be so brilliant, and in case if he happens to return to his homeland, there won't be the glory that he had witnessed in the past. That glory won't be there. The colors won't be so brilliant, the Jhelum's water so clean, so ultramarine, my love so overexposed. And in the last stanza he says, and my memory will be a little out of focus. In it a giant negative, black and white, still undeveloped. Here he talks about the blurry image of Kashmir. As we know, over a period of time, due to the political turmoil, the glory of Kashmir has diminished. And Agha Shahid Ali points to the same thing, that if he happens to return to Kashmir, the glory won't be there. The image, that glory, that pride, it won't be there. The image will be blurry. He compares it to a negative, which is still undeveloped. अगर हम बात करें पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर की, तो यहाँ पे आगा शाहिद अली एक नॉस्टैल्जिक पोएम लिख रहे हैं. उन्होंने शायद एक पोस्ट कार्ड उनको रिसीव हुआ है कश्मीर से, जिस पे कश्मीर की एक फ़ोटोग्राफ भी लगी हुई है, और उस फ़ोटोग्राफ को देखने से वो उनमें एक होम सिकनेस आ जाती है, और वे ये कहते हैं कि
शायद उस पर एक पोस्टल स्टैम्प भी लगा है हिमालयाज़ का, जिनको वो कह रहे हैं कि वो 1/2 इंच का है, क्योंकि पोस्टल स्टैम्प एक 1/2 इंच का एक छोटा सा पेपर होता है। तो यहाँ पे एक आयरॉनिक स्टेटमेंट भी हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ग्लोरी है कश्मीर की वो ख़त्म हो गई है, इसीलिए 1/2 इंच हिमालयाज़ का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। लिटरल सेंस में एक पोस्टल स्टैम्प है, मगर आयरॉनिक वे में आगा शाहिद अली ये कह रहे हैं कि कश्मीर की ग्लोरी जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कम हो गई है। दिस इज़ होम एंड दिस द क्लोजेस्ट आई एवर बी टू होम। उसके बाद ये कह रहे हैं कि शायद जो ये फोटोग्राफ है, शायद इसी से मैं इमेजिन कर सकता हूँ अपना होमलैंड। वो ये डिपिक्ट करना चाहते हैं कि शायद ही कभी ऐसा वक्त आएगा जब मैं वापस अपना होमलैंड देख पाऊँगा, और फ़िलहाल के लिए सबसे ज़्यादा क्लोज थिंग मेरे पास ये फ़ोटोग्राफी है, और शायद ही इससे ज़्यादा क्लोज या लिटरल सेंस में, प्रैक्टिकल वे में मैं कश्मीर जाके उसको फिर से विटनेस करूं। मगर उसके बाद फ़ौरन बाद वो ये कहते हैं कि अगर मुझे चांस मिला या अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं वापस अपने होमलैंड गया, तो मेरे हिसाब से वहाँ वो ग्लोरी नहीं होगी जो मैंने पहले विटनेस की थी। वहाँ के वाटर्स इतने क्लीन नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि कश्मीर शायद ही कभी अपनी उस प्राइम ग्लोरी में वापस आ पाए, एंड माई मेमोरी विल बी अ लिटिल आउट ऑफ फोकस। और शायद जो मैं ऑलरेडी एक मेमोरी कैरी कर रहा हूँ कश्मीर की, उसकी ग्लोरी की, शायद ही वो वापस मेरे फोकस में आ जाए जब मैं रियल सेंस में कश्मीर फिर से विटनेस करूँ। और वो मेमोरी मेरी जो वो इतनी ब्लर होगी जैसे एक नेगेटिव होता है, जो कि ओल्ड फोटोग्राफ्स जब हम लेते थे तो उनके नेगेटिव्स पहले निकलते थे, फिर उसके बाद वो डेवलप होते थे। तो अगर शाहिद अली कह रहे हैं कि वो मेमोरी जो है वो एक नेगेटिव की तरह होगी और वो स्टिल अनडेवलप्ड होगी। वो पूरी मेमोरी जो उसका वो पूरी जो ग्लोरी है कश्मीर की, वो शायद ही कभी वापस आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।